Okay, good. So let's begin. Please write subheading लिख लीजिए. Next topic is language and communication. ठीक है. See यहाँ पर can you tell me what is the difference between language? Okay, let me ask one more word add कर लेता हूँ. For example, tomorrow if it comes, you can say language, speech and communication. Can you tell me what is the difference between or difference among these three? ठीक है. तीन चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर. लैंग्वेज, ठीक है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन. इतना बता दो इनमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा है, मतलब सुपर सेट किस, विच विल कम अंडर द बिगर सेट, विच वन हैज द ब्रॉडेस्ट सेंस, ब्रॉडेस्ट मीनिंग? कम्युनिकेशन. ठीक है, वेरी गुड. सो इट मीन्स कम्युनिकेशन इज ग्रेटर. उसके बाद लैंग्वेज एंड स्पीच में कौन सा वाला आएगा? ओके, एंड लैंग्वेज लास्ट में. एंड वन मोर थिंग देखो, लैंग्वेज एंड स्पीच व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज ए टूल्स, सी दोनों स्पीच एंड लैंग्वेज बोथ ऑफ देम आर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन. बोथ कैन बी डू. स्पीच इज व्हाट, वर्बली जो आते हैं दैट इज स्पीच, ठीक है. बट लैंग्वेज जो है it can be verbal or even it can be written also. Written language भी हो सकता है ना. So that's the reason why you can say language in the second and then speech. ठीक है. And अगर no in terms of Venn diagrams में बात करना है तो you can say communication and all forms of languages will fall within the communication. All types of speeches will be falling within speech, language, communication. इस तरीके से represent कर सकते हैं. Is there any exception? Just see if there is any exclusivity or any exception है तो बताइए. Say communication is a broadest one, जहाँ पर it can be done by speech or it can be done by language, written format, other format, or it can even also done by signs, behaviors. See यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कम्युनिकेशन. एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी, मतलब कम्युनिकेशन इज व्हाट, यू नो, इंटरैक्टिंग और इंडिकेटिंग समथिंग टू समबडी एल्स, ठीक है. दैट कैन इवन बी डन बाय बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल घर पे बच्चे जब मुंह बना लेते हैं वो क्या करते हैं? They don't talk, and when they don't talk they want to express that they are angry. How do they express? They behave in a certain way. इधर खाना नहीं खाएंगे या गुस्सा करेंगे या उनके पास में जाएंगे तो they may like show anger. इस तरीके से behavior. So behavior is also way of a communication. So that's the reason why communication is the broadest one under which you can have language or speeches. ठीक है. इसमें सबसे फर्स्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का लिंक क्या है ये वाला पढ़ लेते हैं. देन वी विल ट्राई टू लुक एट द कल्चर एंड लैंग्वेज. ठीक है. सो प्लीज राइट, लिंक लिख लीजिए. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हेडिंग. इसमें द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर. लैटिन वर्ड जो है दैट इज कम्युनिकेयर. इस वर्ड से डिराइव हुआ है कम्युनिकेयर. इसका लिटरल मीनिंग टू इम्पार्ट. मीनिंग इज टू इम्पार्ट और टू शेयर करना. टू इम्पार्ट और टू शेयर और टू मेक कॉमन. Something to make common. This is the meaning of communicate. So communication in a sense, what is the meaning of it? To impart something or to share something or to make something common. That is what communication is. ठीक है, etymologically if you speak. Please write next point में लिख लीजिए. According to
हेलन केलर communication is much broader than language. Communication is much broader than language. And language's essential function, मतलब languages, इस आइफन करके लिख लीजिए, languages essential function is to facilitate communication. Please write. Communication involves any means of transmission of information, मतलब any means of transmission of information यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करो, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन as long as the symbols, signs or behaviors, as long as symbols, signs or behaviors are commonly shared and understood, So this is what communication is. और मेनली कम्युनिकेशन जो है हम टू वेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है. व्हाट आर दोस टाइप्स? जैसे कम्युनिकेशन का टाइप्स अगर बात करते हैं, एक है जो वर्बल वाला, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन जो है इट कैन बी डन ईदर विथ स्पीच, बाय स्पीकिंग और थ्रू द लैंग्वेज, ठीक है, लाइक बाय राइटिंग द वर्ब्स, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. अनदर वन जो है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सी दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, दिस इज एसेंशियली इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वोकल्स. हियर रादर देन vocal symbols speech there will be gestures, signs और behaviors. इसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. दैट इज व्हाट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सी जनरली आपका एग्जाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, सम डिफिकल्टीज आल्सो देयर इन अंडरस्टैंडिंग दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, ठीक है. Like other day when we are using the symbols, I told you how the symbols are interpreted. These are nothing but symbols, all the gestures are nothing but symbols. See, what we understood by symbols, symbol is something which is to denote something else. That is what we have understood. So यहाँ पर we are using different gestures. So that gesture meaning may vary from society to society, how the society is interpreting it. ठीक है. Like I gave the example of like इस तरीके से, like this particular symbol it indicates that superb. For us it is superb, excellent, very tasty, or कुछ चीज़ें बताना है, everything is okay. Some other western societies say it means all okay, everything going smooth. Similarly, if you go to southeastern societies, there it has like sexual interpretation for the same, ठीक है. So इस तरीके से sexual provocation जैसे मानते हैं. So इस तरीके से society to society it varies. So यहाँ पर इस सिंबल को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू गिव व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर पासिंग ऑन, ठीक है. सो ऑफन विच मे हैव सम
implications. That's the reason why it is very much important for us. So that's the reason why we are going to learn about this non-verbal communication. So please सब heading लिख लीजिए, non-verbal human communications. Non-verbal human communication. थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ लिंक कर सकते हो आर्टिकल 19. सो सपोज फॉर एग्जांपल, इफ फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चे डिसिप्लिन नहीं बैठा है, सपोज समटाइम्स वी आल्सो प्रैक्टिस इट, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग, दे आर अमॉन्ग देयर लाइक दे आर डिस्कसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, देन इंस्टेड ऑफ टीचिंग इफ आई बिकम साइलेंट, so automatically people will notice after a time they will calm down. So what is it? Here my silence is a kind of communication telling that you guys are not behaving in a disciplined manner in the class. So even a silence is a kind of communication. Not speaking nothing, not speaking anything can also be a expression of something. So यहाँ पर broader concept लेना होगा, ठीक है. So that's what we are saying कि even a silence can be a this. Please write non-verbal में लिख लीजिए. According to Anthony Wilden, linguist, ठीक है, Anthony Wilden, every act, every pause and every movement, every act, every pause and every movement in the living and social systems, in the living and social systems is also a message, even silence is regarded as a type of communication. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, प्लीज राइट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is a mode of transmitting information by the way of non-vocal means, non-vocal मतलब related to the vocal sounds that we make. यहाँ पर non-vocal means such as, please write, such as gestures, signs, postures, मैनरिज्म्स, जैसे डिफरेंट मैनरिज्म भी दिखते हैं ना, मैनरिज्म्स, ये मेरा मैनरिज्म करके बोलते हैं, ठीक है, मैनरिज्म्स, बिहेवियर्स एटसेट्रा. द स्टडी, फुल स्टॉप इसी में कर लीजिए, द स्टडी ऑफ सच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड काइनेसिक्स. The study of such non-verbal communication is called kinesics. से अगर इस पे बात करेंगे तो यू हैव लाइक यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कुछ चीज़ें होता है यूनिवर्सल, जैसे इफ़ यू हैव पेन, व्हाट वी विल डू,
विल इमीडिएटली इधर मतलब जहाँ पर पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ते हैं, या वी मे से लाइक वी मे क्राई, वी मे समटाइम्स like make such gestures that pain is happening. And similarly other जैसे dislike है, anger है, all these are universal, they can be seen in almost all societies, ठीक है. And with respect to these non-verbal communications, no, the gestures may vary from society to society, ठीक है. जहाँ पर the other day, this is the reason why I have been telling you to watch that movie, Gods Must Be Crazy. वहाँ पर there is a campaign, like story goes like this: the actors, like both male and female actors, they had to pass through a forest and they had to camp in the night in that forest. So when they put the, when they lit that campfire, a rhino comes and lights off that fire, and the female actor misunderstands male that this person has done that, ठीक है. So then after some time through that way, some natives comes and he wants to prove that he did not do that, ठीक है. So he asks those natives, those people, they say like this. So generally हम हाँ बोलना है तो क्या करते हैं, we nod our head vertically yes के लिए, मना करने के लिए horizontally ऐसे करते हैं. What they do is they are like opposite of it, ठीक है. So let me show you that. So that kind of confusions can happen. See, if you get time, like वैसे भी after this I'll be going on a small break to write my mains. Then you watch these documentaries and movies which I'll suggest. Actually they helped me a lot when I was beginning with the subject, ठीक है. So like visual representation, ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से माइंड पे होता है. Rhino scene in Gods Must Be Crazy. I think this is the non-verbals in another culture करके किसी ने somebody has put it, ठीक है. Is it visible to you? So they simply sideways they nod. They always nod their head sideways in order to say yes, ठीक है. So such sort of confusion can happen with the non-verbal communication, right? Yes. Sorry. So in order to avoid that, ठीक है, that is one problem with the non-verbal communication. And second thing है कि the interpretation of it, it's sometimes confusing what you are saying. Like I gave the example of dumb charades that we play with our friends. So non-verbal communication, though it has like even initially it could have been the sole mode of communication in order to coordinate in terms of hunting and all. But as the time progresses, nowadays also we do the non-verbal communication, but that communication we generally do it in verbal manner. Non-verbal communication nowadays मतलब करते हैं but इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि confusion chances है ज़्यादा, ठीक है. And even if you are doing this non-verbal based communication, some sort of verbal association we definitely give it to it, ठीक है. So that is another point. Next please write. अपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? यू मस्ट हैव रिटन दैट काइनेमिक्स, ठीक है. नेक्स्ट प्लीज राइट, काइनेसिक्स लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए द नॉन-वर्बल communication appears to be universal in humans,
For example, to recognize happiness, sadness, angry, hunger, fear, disgust, etc. तो स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए. However, some gestures are far from universal. Some gestures are far from universal and often lead to cultural misunderstanding. Example, moving head, मतलब nodding, we call it as nodding. Moving head up and down is yes in India, while it is no in Greece. So if you go Greece and if you start saying, suppose if you want to say yes, and if you nod your head up and down, that means you are saying no to it. ठीक है? So it may vary. Next. Please write next point में. The symbolic anthropologists and others emphasized on the symbolic communication through gestures to understand the underlying meanings. So this is all about your non-verbal communication. इसमें और भी आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर सकते हो. So इसमें चाहिए तो आप रिलेवेंस भी लिख सकते हो. Relevance, if you want you can write the relevance of the non-verbal communication. See, generally अगर secret messages बात करना है, it is highly relevant, and code language वगैरह बात करना है, which is useful for you, it is highly useful. Even the gesture based or sign language based communication जो है, it is not unique to the humans. Speech language is unique to the humans, but non-verbal communication is not unique to the humans. See, there are so many studies indicated that even chimpanzees have a kind of non-verbal communication they coordinate. ठीक है? It has also like famous primatologist Jane Goodall. She has conducted the research and concluded that see chimpanzees they do collective hunting. They do the collective hunting like humans. जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करके एक एनिमल को कॉर्नर करके हंट करते हैं, उसी तरीके से chimpanzees coordinate and through vocalizations and through gestures, and even see we have evidences that I forgot the name of the chimpanzee which died recently. I forgot the name. That chimpanzee has learned more than like 60 verbs through the signs. It can ask for drinking water, if it is hungry, if it wants to go out, if it wants a ride, all these it can do the sign based
No, it can do the sign based communication. So this non verbal communication is not unique to the humans, it can be like others. Even sometimes we see, if you have pets, dog or cat or something, if they want something, like if they wanted to go outside, they literally like take you, or they show that if you train, of course if you train only, they can bring the like the belt or something with which you generally take it to the walk to indicate that it wants to go walk. Similarly hungry है तो उसका जो खाने का बाउल जो है वो लेकर आना, इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. सो ये रिलेवेंसेस में बात कर सकते हो. एट द सेम टाइम इसका जो शॉर्ट कमिंग्स है वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे हाउ दे आर गोइंग टू लीड टू शॉर्ट कमिंग्स, how they lead to confusion, ठीक है. and it is highly subjective and interpretative, it may vary from society to society, varies from society to society. ये सब shortcomings में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है. universality is not always present, इस तरीके से, ठीक है, examples के साथ. this is all about non verbal communication.